Namaste. Hi. Good evening, friends. Welcome to this press conference by Honorable Minister of Railways, Communication, IT and Electronics, Shri Ashwini Vaishnaw ji. First, he will have the opening remarks and then it will be followed by question and answer session. Over to you, sir. As you all know, the last 10 years have been 10 years of inclusive growth. These 10 years have been Prime Minister Modi ji's clear focus on bringing every section of the society into the mainstream of economic growth. This budget reinforces that 10 years work, where the four pillars of our society, our sisters and mothers, our young people, our farmers, and the poor section of the society, low-income groups, they will all basically get significant support and significantly better opportunities. Simultaneously, the country will basically keep on improving on its infrastructure through the CAPEX program. I'll come to the focused discussion on railways. As all of you are aware, 10 years back, when there used to be a separate railway budget, the thought process was always add new train, extend a particular train. There was no focus on increasing capacity. 10 years back, there was no focus on improving safety. In last 10 years, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has totally changed the paradigm and put entire focus on creating new capacity, getting new technology, and making sure that safety gets the topmost priority. As a result of this, in the last 10 years, 26,000 kilometers of new tracks have been added. 1,08,000 crore has been invested on safety systems. Automatic train protection, which was installed by railways world over in 1990, started in India in 2016. From 2016 onwards, good focus, proper focus on getting ATP, which is Kavach, has started. New generation of trains like Vande Bharat, Amrit Bharat, Vande Metro and Vande Sleeper are being developed. Many of them are already running and very popular. In this budget, a very big focus has been put on creating additional capacity through 3 corridors. First is energy, metal and cement corridor, which will help reduce the pollution on roads and make sure that the cost of logistics comes down. Second is port connectivity, which will provide seamless connectivity to the ports through railway in a multimodal Gati Shakti way. And third is, if you look at the shape of our network, it's in the form of a quadrilateral and diagonals. So this is akin to the golden quadrilateral of highways. Similar to that, our railway network is there. So Amrit Chaturbhuj will be started wherever high density, high traffic density routes are there, they will all be upgraded. Overall, through these corridors, 3 corridors, about 40,000 kilometers of new tracks will be laid in the next 6 to 8 years. With this, there will be a significant increase in the capacity of railways. And as you know, railway is the least polluting mode of transportation. So 90% pollution is saved. 90% CO2 emissions are saved by the use of railways.
Cost wise also it is about 40-50% better, cheaper. So this will really bring a big transformation in our country's economy, make it more efficient, make it more productive, and reduce pollution, so make it more sustainable. The second big announcement is that the success of Vande Bharat, success of Amrit Bharat has led to the fact that now we can upgrade all the coaches which are there. We have about 40,000 coaches, conventional. They can all be upgraded with the experience that we have behind us. The work which is happening on creating more capacity, that is happening on multiple fronts. Last year, we added 5,200 kilometers of new tracks, which is equivalent of entire network of Switzerland. This year, we are adding 5,500 kilometers. So from 4 kilometers per day in 2014, we are now adding about 15 kilometers per day as the new tracks. So this is a significant improvement in the way of working, in the way our network is managed, in the way our growth is required. With the capital investment envisaged in today's budget, we are at 2,52,000 crore rupees capex for the current year. For the next year. Current year, we have already achieved 82% of our capex budget by end of January, which is significant in the sense that despite the elections and all, work continued, and we have been able to reach that 2,40,000 crore capex of the current financial year. Next year, we'll be doing 2,52,000 crore. So this is, in a nutshell, a clear focus on increasing capacity, clear focus on improving the passenger experience, clear focus on improving infrastructure. As you are aware, 1,300 stations are being reconstructed across the country, and the progress is very good. I have personally visited so many stations. Typically, station development in a setup like railway takes about 10-12 years, but we have compressed all that into 2-3 year program so that we are able to give better services to our passengers and citizens. In a nutshell, Prime Minister's focus on railway is very clear. It is helping bring more capacity. It is helping to, in fact, if we look at it, once the 3 corridors are completed, we will have so much capacity, enough capacity, that the waiting list Jhamela will be over. So that is the kind of capacity which is getting created. I'll speak in Hindi, then we have questions. साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने हमेशा वंचितों को वरीयता दी है. हमेशा समाज के उन वर्गों को जो कि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से पीछे रह गए थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का मोदी जी ने काम किया है. चाहे उज्ज्वला गैस के स्कीम हो, चाहे हर घर नल से जल का कार्यक्रम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़ा काम हो, इन सब से वो क्षेत्र जो हमेशा पीछे रह गए थे, उन सबको मोदी जी ने हमेशा अपने मेन स्ट्रीम में, अपने प्रयासों से मेन स्ट्रीम में लाए. मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं. इसीलिए देश के हर राज्य में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वहां सरकार हो, हर राज्य के लिए मोदी जी ने हमेशा बहुत अच्छा एलोकेशन किया है बजट्स में. आज का बजट मोदी जी के इसी वंचितों की वरीयता वाले इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है, और साथ ही साथ देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि देश को एक विकसित भारत बनाने का फाउंडेशन आज ले कर सकें, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस फाउंडेशन को ले कर सके, उसके लिए पिछले कई वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो पहले 3.5 लाख करोड़ था, उसको मोदी जी ने 5.5 लाख करोड़ किया, फिर 7.5 लाख करोड़ किया, फिर 10 लाख करोड़ किया, और अब 11 लाख करोड़ किया.
इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया। तो ये देश की एक ऐसी फाउंडेशन मोदी जी ने रखी है जिससे कि आगामी कई वर्षों तक 7 to 8% की ग्रोथ पे भारत रहेगा और 7 to 8% की ग्रोथ से भारत आगामी 3 वर्षों के अंदर टॉप 3 इकोनॉमीज में आएगा। इन 10 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमीज में आया है। आगामी 3 वर्षों में टॉप 3 इकोनॉमीज में भारत की एंट्री होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पीरियड आ रहा है। बहुत वर्ष बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के होंगे। मैं फोकस करूंगा रेलवे पे। साथियों, आज से 10 वर्ष पहले तक रेल बजट का मतलब होता था कुछ गाड़ी चला देना, कुछ गाड़ी अनाउंस कर देना, चाहे कैपेसिटी हो ना हो। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले फोकस किया, रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। जहां जनरल बजट से मात्र 15,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट मिलता था 10 साल पहले, आज 2 लाख टेक्नोलॉजी जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी जिसको कहते हैं, वो सारी दुनिया में 1990 में लग चुका था। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने भारत में रेलवे की सेफ्टी पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। मोदी जी ने 2016 में आके कवच को अप्रूव किया और आज अच्छी प्रोग्रेस है। कवच में 5 सिस्टम्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के 3040 किलोमीटर लग चुका है। टावर कवच के 269 लग चुके हैं और स्टेशन के ऊपर जो डेटा सेंटर बनता है कवच का, कंप्लीट उसकी कंप्यूटिंग पावर और डेटा सेंटर बनता है एज कंप्यूटिंग का, उसके 186 स्टेशन पे लग चुका है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट 827 किलोमीटर पे लग चुका है। लोकोस पे 170 लोको पे लग चुका है। तो एक तरीके से सेफ्टी हो, पैसेंजर एक्सपीरियंस हो, पैसेंजर कन्वीनियंस हो, हर चीज पे मोदी जी ने बहुत बड़ा फोकस दिया है। साथ ही साथ फोकस दिया है इलेक्ट्रिफिकेशन पे। करीब करीब देश में कई स्टेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं। जहां बचे वो आगामी महीनों में सब कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही ट्रैक्स की नए कैपेसिटी लगाने पे बहुत बड़ा फोकस किया है। 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक लगे हैं। जैसे पिछले साल 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक लगे थे, यानी स्विट्जरलैंड की रेलवे के बराबर का नेटवर्क ऐड किया। इस साल 5,500 किलोमीटर के ट्रैक लग रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा हुआ। बुलेट ट्रेन 280 किलोमीटर बन गई है। ओवरऑल रेलवे का हर एस्पेक्ट पे मोदी जी ने फोकस करके बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है। इस बजट में 3 बड़े कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं, एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज। एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर, ये दोनों पोर्ट्स को और जो बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देंगे। अमृत चतुर्भुज जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, एक चतुर्भुज की शेप का है। यहाँ जहां पर भी डबल लाइन है, कंजेस्टेड है, वहां पे 4 लाइन करी जाएगी। जहां 4 लाइन है उसमें 6 लाइन करी जाएगी। जैसी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। ओवरऑल इन तीनों कॉरिडोर्स के माध्यम से 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जाएंगे आगामी वर्षों में। 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का मतलब हुआ पूरे जर्मनी का जो नेटवर्क है उतना नेटवर्क भारत में एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। और इसकी जरूरत है क्योंकि आज करीब करीब देश में 700 करोड़ लोगों को रेलवे में ट्रेवल कराते हैं और रेलवे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। दुनिया के सबसे सस्ते रेलवे सिस्टम्स में से भारत का रेलवे सिस्टम है। तो
जब गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए ध्यान देना है तो वहां कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। 1000 करोड़ लोगों को कैसे ट्रेवल कराए 2030 तक, वो व्यवस्था इस कॉरिडोर से होगी। 1500 मिलियन टन आज कार्गो लेके जाते हैं, 3000 मिलियन टन कैसे लेके जाएं, वो व्यवस्था इससे होगी, क्योंकि रेलवे से 90% पॉल्यूशन कम होता है। 90% पॉल्यूशन कम होता है रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करने पर। तो एक तरीके से सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लीन ग्रोथ का ये फाउंडेशन है। विकसित भारत 2047 तक बने, उसके लिए ये फाउंडेशन है। आज वंदे भारत और अमृत भारत और ट्रेन में नए अनुभवों के कारण जो अनुभव हुए, उन अनुभव से कैसे एग्जिस्टिंग सारे कोच को अपग्रेड कर सकें। करीब करीब 40,000 कोच हैं जिनकी रेजिडुअल लाइफ है आगे, उनको कैसे अपग्रेड करें, वो फैसला भी आज बजट में अनाउंस हुआ है। बजट में ओवरऑल रेलवे के लिए एक नया रोड मैप तैयार हुआ है, रेलवे के लिए नया एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, और विकसित भारत में कैसी रेलवे होगी उसका फाउंडेशन आज के बजट में ले किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक विजनरी बजट लेके आए। I'll take questions now, हिंदी इंग्लिश whichever। अपन स्टार्ट करें अपने हमेशा वाले सिस्टम से। सबसे पहले इधर से चालू करते हैं, इधर से एकदम लास्ट में इस तरफ कोई भी क्वेश्चन ऐसे करके ऐसे जाएंगे, ठीक। सर मैं सचिन बुधौलिया हूँ। मैं इधर से कोई क्वेश्चन इधर, फर्स्ट रो नहीं, सेकंड रैंक टेलीकॉम का इसके बाद में ले, ओके। थर्ड आप लीजिए, आइए। सर ये जो आपने कहा कि रेलवे का ब्लूप्रिंट जो है, तो वो ब्लूप्रिंट एक्चुअली क्या है? दूसरी चीज कि ये 40,000 कोच को अपग्रेड जो आप करने का कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ जो वित्त मंत्री का भाषण सुनकर के वंदे भारत की तरह से उसको अपग्रेड करेंगे, तो वो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए कि वो क्या है। दोनों पॉइंट आपके में अपग्रेड, देखो ब्लूप्रिंट है रेलवे का। आज गरीब परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की सवारी है रेलवे। वेटिंग लिस्ट बहुत सारा रहता है, कैसे वेटिंग लिस्ट को कम करें, कैसे वेटिंग लिस्ट को समाप्त करें, इसके लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी और नई गाड़ियां चलानी पड़ेगी। और नई गाड़ी चलाने के लिए नए ट्रैक चाहिए, नई गाड़ी भी चाहिए और नए ट्रैक भी चाहिए। बाकी सेक्टर से रेलवे अलग है। बाकी सेक्टर में मान लो गाड़ी प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया तो एग्जिस्टिंग सड़क पे भी पीछे पीछे भी चल जाए, लेकिन रेलवे में ट्रेन्स के चलने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए ट्रैक भी उतने ही चाहिए, इतने ही जरूरी होते हैं जितने ट्रेन्स जरूरी है। तो इस ब्लूप्रिंट में आज 700 करोड़ लोगों को ट्रैवल जो कराते हैं, उसमें 1000 करोड़ कैसे ट्रैवल कर सके, वो ब्लूप्रिंट का पहला भाग है। दूसरा भाग सेफ्टी। सेफ्टी के लिए जरूरी है कि गाड़ियां, ट्रैक्स कंजेस्टेड ना हो, सफिशिएंट टाइम मिले मेंटेनेंस के लिए, सफिशिएंट टाइम मिले रिप्लेसमेंट के लिए। उसके लिए जरूरी है कि कैपेसिटी इनफ हो ताकि गाड़ियों को कैंसिल ना करना पड़े। आज अगर मेंटेनेंस करते हैं तो या तो स्टॉपेज हटाना पड़ता है या फिर गाड़ियों को रोकना पड़ता है। सफिशिएंट कैपेसिटी अगर होगी तो एक ट्रैक को मेंटेन कर रहे हैं, दूसरे ट्रैक पे चल पड़ी गाड़ी, दूसरे ट्रैक को मेंटेन कर रहे हैं, पहले पे आ गई। तो एक तरीके से कैपेसिटी होने से मेंटेनेंस और सेफ्टी दोनों चीजें बढ़ती है। और तीसरा बड़ा नए तरह की ट्रेन सर्विसेज, तो वंदे भारत हुई, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, अमृत भारत, नमो भारत, इन ट्रेन्स के पूरे जुड़ाव से पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस नया होता है। 40,000 कोच को जो बदलने, अपग्रेड करने का है, वो है कि आज का जो अनुभव है वंदे भारत के कोच का, अमृत भारत के कोच का, इन दोनों के अनुभव से सीख कर कैसे इन 40,000 कोचेस को अपग्रेड करा जाए। अपग्रेड करना, जो एसी है उनको एसी में अपग्रेड करें, जो नॉन एसी है वो नॉन एसी अपग्रेड हो। लेकिन नॉन एसी अपग्रेड भी कैसे हो सकते हैं अच्छे से, कि भाई टॉयलेट अच्छी क्वालिटी की हो, सीट्स का कंस्ट्रक्शन बेटर हो, जो कपलिंग है वो कपलिंग चेंज हो जाए। कैसे कि सेमी परमानेंट कपलिंग होने से सेफ्टी बढ़ती है। जैसे दोनों अमृत भारत ट्रेन में लगी है, वंदे भारत में तो है ही है, अमृत भारत ट्रेन में सेमी परमानेंट कपलिंग लगी है, तो उससे ट्रेन की सेफ्टी बढ़ती है। इस तरह से कई सारे जो अमृत भारत और वंदे भारत कोच में जो
फीचर्स लाएं, सब जगह चार्जिंग का पॉइंट हो, पानी का एक ऑटोमेटिक मेजरमेंट का सिस्टम हो, जिससे कि पानी खत्म होने से पहले पहले पता चल जाए, तो ट्रेन में आप उसकी प्रॉपरली टैंक को फिलअप कर सकें। जीपीएस लगे, सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगे। तो ये सारे जो अपग्रेडेशन है, ये सारे अपग्रेडेशन से पैसेंजर्स की सेफ्टी और सुविधा दोनों बढ़ती है। तो वो आज के अनाउंसमेंट में है। इसमें एसी नॉन एसी का कोई नहीं है इश्यू। जो एसी है वो एसी अपग्रेड होगा और नॉन एसी वो नॉन एसी अपग्रेड होगा। एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन सारा डिपेंड करता है लोको के कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे पुश पुल है, पुश पुल में एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन दोनों बढ़ जाता है। तो पुश पुल इंजन से आता है और पूरी की पूरी ट्रेन के कॉन्फ़िगरेशन से आता है। नेक्स्ट इधर आगे इसी सीक्वेंस में चलते जाए। सर ये ट्रेन तो इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ा भी रहे हैं, वेटिंग की कब तक समस्या खत्म करेंगे सर? मेरा अंदाजा है 2030 के आसपास, 2030-2031 के आसपास वेटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे 40,000 किलोमीटर बनेंगे, 40,000 किलोमीटर से इतनी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी कि सफिशिएंट ट्रेन चलाई जा सकती है। सर व्हाट इज द एस्टिमेटेड? कोई और नहीं? हाँ, इधर से चल रहे हैं, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आपका तो आपका ले लेते हैं, चलो आप ले लो पहले, उसके बाद में आगे दे देंगे। Sir, one question I had was on the operating ratio, in terms of what was 98.7 है। this is revised for this year or for next इसी year? साल का है। इसी साल का 98.7, and what is the estimate for next year? नेक्स्ट ईयर भी करीब करीब 98 के आसपास है। 98 के अभी सारा आसपास। पेंशन का खर्चा टोटली रेलवे के रेवेन्यू से आ रहा है। Right. और माने एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है ये कि वी आर हैविंग वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑन एक्सपेंसेस, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑन कॉस्ट। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट मिलने लग गया, अब इलेक्ट्रिफिकेशन का बेनिफिट मिलने लग गया कि पैच में शुरुआत होती है तो पैच में होता है, उसके बाद में बीच के पैचेस जब फिलअप होने लगते हैं तो कंटिन्यूस होने लगता है। तो वो बेनिफिट अब मिलने लग गया है। डीजल का कंजम्पशन क्लोज टू काफी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर दे सकते हैं बाद में, लेकिन सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलने लग गया। Right. And sir, one question I had was on the revenue estimates that are there for the current year and the next year. Last year during your budget presentation, you had also said that when a lot of works are happening, it's difficult to scale up that kind of revenue generation because of capacity. This year also, your estimates are largely on the same line. So just wanted to ask, when can we expect your revenue estimates to start reflecting the vision that you have in terms of 3,000 million tons? And It is already reflecting in a great way because revenue has increased significantly in the last 2 years. If you see the actual numbers, it has increased significantly. Yes, as we are still in a situation where there is huge congestion, where capacity has to be added significantly, and the trains also have to be run at the same point of time. Correct? We cannot stop trains the way many other countries they stop for 8 months. There are countries where they stop the entire corridor for 8 months and then do the work. So we cannot do that. We have such a huge demand for railway. So we have to manage the 4 big things simultaneously: safety, punctuality, loading, and capacity creation. All the 4 items we have to manage simultaneously. It's a difficult task, believe you me. A network of this size and network of this complexity and a country of our size and complexity, it's a very, very difficult task, but we are successfully navigating that. आपका क्वेश्चन इनका ले ले, फिर आपके पास है। हाँ, टेलीकॉम रुक जाते हैं 2 मिनट। हाँ, रेलवे, हाँ प्लीज, फिर बाद में दादा का। Sir, we would like to know about the India, Middle East, Europe corridor IMEC. progress, sir. Yeah. IMEC. And sir, my second question is on the dedicated freight corridors and the new corridors that are announced. So the 3 new corridors that are announced are mixed. And then there are also 3 dedicated freight new corridor plans. So are these overlapping the routes, or will this be? I'll explain that in detail. So first, IMEC is progressing very well. Lots of discussions have happened. This is a multilateral effort in which so many countries are involved, but the progress so far is very good. Conceptually, the alignment and the missing links which are there, they have been identified,
And conceptually, there is good clarity that this is one very big insurance against any disruptions in the trade routes. So there is good agreement about IMAC. The three corridors that have been announced today, see the approach of railway planning has changed with this. What is the approach? The approach earlier was look at a project basis, either political pressures or some requirements or some other things, right? That was the approach 10 years back. In last 10 years, Prime Minister is fully focused on wherever you need capacity, you focus on that area, right? So these three corridors basically have considered all the origin and destination nodes of the country, whether for passenger or for cargo, looked at all the O&D pairs, put it on the PM Gati Shakti framework, looked at the existing network, and how do we augment the existing network, right? Either by adding some sections, or by doubling or multi-tracking certain sections, or by creating rail over rail flyovers so that you don't have to do surface crossings, or by having totally new lines, correct? So multiple different solutions have come out. When we look at the entire thing on the PM Gati Shakti framework, on that portal, immediately the solutions come out, right? For example, if there is a major hub from where, let's say, eastern part, huge traffic flow is there towards south and west. For example, from Bihar, from Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Bengal, and northeast, there is very significant transport movement towards Hyderabad, towards Chennai, towards Bengaluru, towards Mumbai, correct? So how do we cater to this traffic flow? Then, so it's like, for example, there is a very large transport originating from Nasik area. How do we cater to that? Where are the destination points? So this entire exercise has taken us about 2 years to complete. It was a very long exercise. This is not something which is announced today. This has been in working for 2 years, and very detailed exercise has been done. About 18 ministries have been consulted. About practically every state government has been consulted. Large number of industry associations have been consulted. Quite a few stakeholders have been consulted, and that's how these three corridors have been envisaged. So the thinking is look at origin and destination, then look at the existing network, then see where is the capacity gap, and then fill up that capacity gap. That's the thinking. So will this It's not like the supersede? dedicated freight corridor. It's not like dedicated freight corridor. That's different. Dedicated freight corridor was a concept developed in 2003 and 2004, where it was envisaged that you have a separate corridor which will carry freight. This is a concept which is very holistic. This is a concept which looks at the entire network as one integrated network, and now look at where are the requirements. It's very scientific, very scientific. So will everything be built, or one thing will supersede the other, or that As in? Then do we understand that all the 6 corridors will be built together? Where are the 6 corridors? There are 3 corridors. The dedicated, the new No, one. it's not a dedicated freight corridor approach. Listen, when you travel on a, let's say, travel from Gurgaon to Delhi, it's a 8-lane highway, correct? You must have driven on that. Even if there is one lane, which is sometime there is some traffic, some accident happens, some car breaks down, you'll see suddenly, even though there are 3 lanes, but there is a huge crowd which comes behind, right? Huge congestion starts building up. In network theory, if you look at the math of network theory, Poisson distribution, e to the power minus lambda t, all that stuff, if you look at that, network theory clearly says that if you segregate physically, then you reduce the overall capacity. If you have integrated network, then 1 plus 1 becomes 2.5. If you have segregated 2 networks, 1 plus 1 becomes 2.
That is the way we have to look at networks. And that is same, that applies for telecom networks, that applies for gas pipeline networks, that applies for water pipeline networks, that applies to railway networks, that applies to electricity networks, it applies to all the networks. So we have taken a very, very scientific approach, absolutely scientific approach in developing this program. Sorry, it was a very technical answer, but I bored you with e to the power minus lambda t. Hello, sir. Sir, for this 40,000 coaches upgradation, what is the estimated cost, sir? करीब करीब 12,000 करोड़ के आसपास आएगी. ना सॉरी, एक सेकंड, वो कैलकुलेट किया हुआ है. सॉरी, एक सेकंड में कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको. 40 into 1600 करोड़. 1600. Sir, we have 2,200 million express. So all will be upgraded up to Vande Bharat standard. That means. मैंने कहा ना आपको कि वंदे भारत और अमृत भारत दोनों का एक्सपीरियंस अपने साथ, इन दोनों एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपग्रेड करा जाएगा. जो एसी कोच है वो एसी रहेगा, जो नॉन एसी कोच है वो नॉन एसी रहेगा. मैं मुद्दे की बात आपको बोल रहा हूँ, कहीं आपके मन में कंफ्यूजन नहीं हो. So it's a 16,000 crore project. You can say that. 1600 हुआ ना कैलकुलेट? नहीं, 16,000. या कैलसी देना है? 16,000. एक सेकंड में भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. सॉरी, 15,200 करोड़. 15,200 करोड़. ठीक है, अब क्लियर है ना? 15,200 करोड़. कोई नहीं यार, अब आप इंजीनियर को लगा दोगे तो ऐसा ही होगा. हाँ, तो हाय सर. सर, आपका ये जो 40,000 करोड़ 40,000 कोचेस को अपग्रेड करने का प्लान है, बाय व्हेन डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी कंप्लीटेड? एंड माय सेकंड क्वेश्चन, 5 साल का काम है ये. ओवर द नेक्स्ट 5 5 years. साल. Sir, my second question is regarding your corridor program. How much of this will be spent in the first year? बहुत सारा काम है. प्री वर्क बहुत सारा हुआ है. पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के कारण आज प्लान करना काफी एक स्मूथ हो गया है. इसमें अब डीपीआर बनाना, फाइनल कंप्लीट उसका अलाइनमेंट फ्रीज करना, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करना, वो सारा काम अब होगा. इसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उस स्टेज से भी आगे बढ़ चुके हैं. मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कैबिनेट में जाने लायक भी हो गए. ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट नहीं है. टोटल इन तीनों में मिला के 434 प्रोजेक्ट्स हैं. इन तीनों कॉरिडोर्स में मिला के 434 प्रोजेक्ट्स. टोटल इन्वेस्टमेंट इन तीनों कॉरिडोर्स पे होगा करीब करीब 11 लाख करोड़ का. 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इन तीनों कॉरिडोर्स पे मिला के. ये एकदम इनिशियल एस्टिमेट्स है. जब डीपीआर बनेगी तब एक्चुअल एस्टिमेट आएगा, इसीलिए मैं नंबर बोलना नहीं चाहता हूँ. जब डीपीआर बनेगी तब डीपीआर के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट आएगी. सर, मेरा सवाल वंदे भारत को लेकर है. इधर से मेरा ये सवाल है कि वंदे भारत जब आई थी तो काफी ऐसी खबरें सुनने को मिली थी, दुर्घटनाएं काफी हो रही थी. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस साल सरकार ने क्या सोचा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वंदे भारत ट्रेन को लेकर. सर जी सर. वंदे भारत की कौन सी दुर्घटना हुई? कैटल वाला इश्यू वंदे जी भारत सर. का इश्यू नहीं है. कैटल वाला इश्यू अपने देश में रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कैटल का आना वो अलग मैटर है. उसमें कई जगह बहुत अच्छी सुविधा हुई है. बेसिकली एक नई तरह की फेंस डिजाइन की है, जो फेंस करीब करीब अभी 300 किलोमीटर के आसपास लग चुकी है. और जहां जहां ये फेंस लगी है, नई डिजाइन है, उसको लगाना होता है, पहले टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है. वहां पे 0 कैटल डेथ्स हो रही है, 0 कैटल अंदर इंट्रूजन हो रहा है. अगर आपका वही क्वेश्चन है ना? जी सर. जी. ठीक. Sir, what is the update on Kavach and when do we expect rollouts or the contracts to happen? What कवच का अपडेट है. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं इसका. See, all over the world, Kavach is basically automatic train protection, ATP.
कवच इज एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। कवच सिस्टम सारी दुनिया में 1990 में लगा, राइट, 1990 में लगा। हिंदुस्तान में तब की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया ऑन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड ट्रेन सेफ्टी। It took our country to have a prime minister like Modi ji to come and approve an ATP. 2016 में मोदी जी ने कवच को अप्रूव किया, पहले ट्रायल्स हुए। कवच इज अ सेफ्टी सिस्टम। अगर आपका ये नॉर्मल कोई चीज है तो इसके सर्टिफिकेशन और जैसे माइक है, माइक इज नॉट अ सेफ्टी सिस्टम, तो इसका सर्टिफिकेशन आसानी से हो जाता है। सर्टिफिकेशन नहीं भी हो तो भी चल जाता है, राइट। लेकिन कवच एक सेफ्टी सिस्टम है, इसकी सर्टिफिकेशन में SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, SIL 4, ये SIL 4 का सर्टिफिकेशन लगता है। SIL 4 is a very very tough certificate to get. Normally a system gets SIL 4 certificate over many years. It took us 3 years to get the SIL 4 certificate. 2019 में SIL 4 certification मिला। 2019 में SIL 4 certification मिला, काम आगे बढ़ने लगा। ऑफ कोर्स 2 साल कवच के जो कोविड के रहे, 20 और 21 वेंट इन काइंड ऑफ कवर, कोविड के कारण प्रॉब्लम्स रही। 21 में तेजी से इस पे काम चालू हुआ। आज एज ऑन टुडे प्रोग्रेस इज, कवच में 5 जो मेजर सब सिस्टम्स होते हैं जो कवच के। ऑप्टिकल फाइबर केबल 3040 किलोमीटर्स इज द प्रोग्रेस एज ऑन एंड ऑफ December. Towers, 269 towers have been installed, कवच के टावर्स। स्टेशन कवच यानी डेटा सेंटर लगता है पूरा स्टेशन के ऊपर, कंप्यूट पावर लगता है, एज कंप्यूटिंग लगती है उसमें, उसका 186 स्टेशंस पे लग चुका है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट 827 किलोमीटर्स पे लग चुका है, 170 लोकोमोटिव्स पे फिट हो चुका है। देश में 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं कवच के, अभी 2 और नए मैन्युफैक्चरर का अप्रूवल प्रोसेस में लगा हुआ है। एक अप्रूवल किसी भी मैन्युफैक्चरर का होने में कम से कम 2.5 साल लगता है, मिनिमम 2.5 years लगता है, सेफ्टी सिस्टम। इसलिए हमको ये भी याद रखना पड़ेगा, पॉलिटिकली हम लोगों की सरकारें जो भारत की 1990 में और जो सरकारें थी, उनको जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। मोदी जी ने 2016 में आके चालू किया इस पे काम। Hi, sir. Neha from HD. So, I wanted to ask, what is the aim of the government for this year? And because we're speaking about Vande Bharat, any update on the sleeper? Vande स्लीपर Bharat? इज कमिंग बाय मार्च। The prototype. प्रोटोटाइप नहीं, पहली 10 गाड़ी आ रही है। Whenever a new vehicle comes, we basically run it for few months or sometimes for one full year. Then we start serial production. So 10 trains are being manufactured. So 10 trains will start coming from March onwards. And this is again a record time. Globally, getting a new train means at least 5 years, right? At least a 5-year time period for getting a new train. Here, Modi ji's time frame is always compressed. Next. उस तरफ पीछे आ जाए, इधर आ जाए सामने से कोई। हाँ हेलो हाँ हेलो ले लो उधर से, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लिया तो ले लो यार। गुड इवनिंग सर। सर आपने वेटिंग लिस्ट की बात की कि हम वेटिंग लिस्ट बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन पूरे देश में जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें चलती हैं एक्सप्रेस या सुपर फास्ट, उसमें कुछ ही कोचेज होते हैं जिसमें जनरल पैसेंजर चढ़ पाते हैं, तो काफी बुरी नहीं, स्थिति देखो होती है। बहुत मैं कई बार इसका जवाब दे चुका हूँ, वापस जवाब देता हूँ। आज भी जो ट्रेन का कॉम्पोजिशन है वो एक स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है, उसी कॉम्पोजिशन से चल रही है। पहले भी 2/3 कोचेज एसी होते थे, सॉरी 2/3 नॉन एसी होते थे, 1/3 एसी होते हैं। आज भी वो की वो कॉम्पोजिशन है। मुझे पता नहीं आप, स्थिति अभी भी दयनीय है लोगों की। मैं बताऊं, देखो डिमांड और सप्लाई में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए मोदी जी इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है डिमांड सप्लाई में गैप को मीट करने के लिए हो रहा है। आज भी जैसा मैंने कहा, आज 700 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, 1000 करोड़ कैसे ट्रेवल करे उसकी व्यवस्था के लिए तो बजट बना है। सर विकलांग कोच की व्यवस्था तो है, लेकिन क्या महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसा कोई स्पेशल कोच जो अगर सेफ्टी पॉइंट और उनके ट्रैवलिंग कंफर्ट को देखा जाए तो ऐसा चलिए हो आपका सकता है? मैं सुझाव लेके आगे बढ़ते हैं इस पे। हो गया, चलिए टेलीकॉम पे आते हैं क्विकली।
टेलीकॉम पे, टेलीकॉम आईटी में कोई पॉइंट? एक टेलीकॉम आईटी में आई विल बिगिन विद द ओपनिंग. A very big decision has been taken today by launching 1 lakh crore corpus fund for developing new technologies. This is going to be a game changer for our country because so many products where our country can take a lead due to the talent that we have. These product development projects, technology development projects will get a way through by which the country can really become a product nation. Today we are a talent nation. We have some of the most sophisticated technical capabilities in our country, and with this corpus fund of 1 lakh crore, we will our country will get opportunities by which products can be developed. हिंदी में बोलता हूं मैं, देश में 1 लाख करोड़ का आज के बजट में जो इनोवेशन के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फंड एक लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है. उस फंड से देश के जो हमारे टैलेंटेड साथी हैं, उन सबको नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा. देश में बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की क्षमता है. इस 1 लाख करोड़ के फंड के माध्यम से इन टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाने की नए टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए एक माध्यम मिलेगा. We'll start from this side. I'll just speak without time. Government expects to mop up 1.20 lakh crore in FY25. If I look at the revenue receipts for FY25 in the telecom sector, the communication services, if you could shed some light on that, and also the fact that you expect to exceed the budget estimates for the current financial year, because that has been revised to 93,541 crore. So that is correct. Telecom sector is today in very robust health. Growth is visible to all of us. The expansion of the telecom network is visible to all of us. Usage of data has increased. So even though we are the most affordable telecom sector in the entire world today, despite that, the overall revenue and the overall government revenue which is a fraction of the total revenue as a formula, that is increasing. I also wanted to ask you, when would the next spectrum auctions be held? What is the roadmap for that? Next spectrum auction will be a limited auction because already large part of the spectrum which was required by the industry was auctioned last year. But every financial year we are trying to have one auction. So we are working on a proposal where wherever required, wherever the smaller chunks which were left out, they will be put to auction. Obviously, this will not be as big as the last one. This will be a very small, significantly smaller compared to the last one. And will have to be held in this fiscal itself because some of the licenses. We are moving fast on that. Piche koi? Okay, this side, front row. So a couple of questions. For this 1 lakh crore corpus that was announced by the finance minister today, what kind of technologies are we looking at? And is this in any way linked to the 1,148 crore allocated for R&D in IT, electronics and CCBT? And second, what is the layout? I mean, as per the PLI 2.0 scheme for IT hardware, if it were to begin in on July 1, 2023 or April 1, 2024, for the first year, the allocation was 321 crore. But in today's budget, the allocation is 75 crore. Can you please explain why that is the case? First question about the corpus fund. The corpus fund is a 1 lakh crore corpus fund by which our entrepreneurs and startups and we can all get an opportunity to create products, as I explained. The contours of this entire corpus and how projects will be selected will come out in detail in coming days. Focus will be on looking at selecting certain projects to begin with, and then moving on to some sort of proposal-based system by which products can be selected, technologies can be selected, and we can have a mechanism. There will be clear goalposts defined, deliverables will be defined,
it will be basis that. About the second question, the actual allocation for a particular scheme is based on the number in the projections which are made by the users of PLI. Basis those projections, the allocations have been made. So the allocation has been reduced for the first year. It doesn't matter. Doesn't matter. The production has started in about 32 units, and new people are. I mean, we recently had announcement from Samsung, so people are very enthusiastic about IT hardware. In Davos, I met people who said that they would like to set up mega manufacturing clusters. So the kind of enthusiasm which is there, and the way our component ecosystem is now growing, that is clearly defining that electronics manufacturing is at an inflection point now. The growth which was like this is going to be like this. So just one follow-up. For this 1 trillion rupee corpus, who is going to be the controlling ministry? Or Aane do na, let the guidelines, they will come. Why do you want everything today? okay. Let the guidelines and the contours of the scheme come out. So is there any, will there be any specific sectors within this that the fund will focus on? Let the contours of the guidelines, contours of the program come out. There will be some key products which will be selected, and then there will be many proposal-based systems. Thank you. Hi, sir. A corpus of 6,903 crores has been allocated for semiconductor development, a majority of which is for OSAT, ATMP, about 4,203 crore. Just wanted to get your views on what the plans are there. As you are aware, the first unit progress is very good. We are likely to roll out the first chip in December of 2024. Basis this, my recent interactions with the industry leaders in Davos was, people have got huge confidence now. First plant from the day of announcement to day of construction, less than 90 days. This is something which people have noticed. The clarity of policy has been noticed. The ability to execute a project of this complexity has been noticed. So the confidence level and the trust level is significantly improved. I used a word called trust shoring instead of near shoring or friend shoring. Today the world is having trust shoring as the construct, and India is a very, very trusted country basis the 10 years of Prime Minister Modi ji's policies. So this is very clearly, it has emerged that India is a trusted geography, trusted country, and that's why there are so many people who would like to shift their manufacturing base to India. This is not only electronics. This also means pharmaceuticals, chemicals, people in engineering goods, people in power systems. There were so many people. I met about 50 odd global CEOs. All of them would like to, even in food processing, people want to set up the base here because of the trust in India. So I would say that the trust on semiconductor manufacturing, trust on India is significantly higher now. We'll see more announcements soon. As you know, I will never announce earlier. Sir, picking up from this, of the 6,900 crore, there's 1,000 odd crore for the fab unit. I think FY24 also we had this, but now the estimate has been reduced. I think 12 odd crores is for the fab. This is the interim budget. Abhi June ka aayega na. So are we expecting something on the fab side? Hey bhai, pakka. And Hoega. Your generation will be lucky generation. And on the you are working in an age where Modi ji is the Prime Minister. On the telecom receipt, 1,20,000 odd crores, how much is coming for the BSNL equity adjustment? If you can. So there's this BSNL equity adjustment also, which makes part of this 1,20,000 odd crores. Hisab dekhna padega. I wouldn't be able to give you that kind of breakup at this. Okay, one last thing is on the USO spend has been at the record high for FY24, and FY25 is 19,000 odd crores. So what's the progress is very good on 4G saturation, the way towers are getting constructed, about close to 40,000 towers are getting constructed. But on 4G saturation, I think there's no development as such which has happened, I think. What do you mean? Like as such, like only fundamentals have been completed, but Come on, you are totally unaware, boss. I must tell you, editor. The 4G rollout, indigenous India's telecom I'm stack. talking about the 4G saturation project. I'm talking about that only.
the 4G India telecom stack has stabilized in record time. When we started rolling it out in July last year, we thought that it will take about 12 months to stabilize. It's already stable. We are in January only. We thought it will stabilize by June 24. We are in January, February now. It is already stabilized. We will start scaling it up in somewhere in May. What was scheduled in next Diwali is what I used to say. That Diwali will now get preponed. Right? That is the technology which will be used in 4G saturation project. Correct? So 4G saturation project, towers, optical fibers, and the software. All the three are progressing very well. So you're talking about this 30,000 odd villages. Which Correct. How many villages have been connected till now? वही तो, अरे यार आप यही तो बात समझो ना भाई मेरे, टावर भी लगना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर भी लगना चाहिए, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी भी आना चाहिए, तब जाके आएगा ना कनेक्शन. हाँ ये ले लो इनका फटाफट ले लो. क्या जतिन ऐसे ही बोलो, your voice is good, yeah. So, sir, leading up to the budget, we had these smartphone component rate cuts, duty cuts. So, can you just explain the rationale behind that and what? A lot of simplification has happened in the component duty structure. See, the thought process is from import substitution, we have to move towards export-led growth. Import substitution is practically done now. We were 10 years back, we were importing 98% of the mobile phones that we used, right? Today, 99% are made in India. So that import substitution phase is over. Now we are making enough for our own country. Now we have to focus on developing the component ecosystem in a very major way. And for that, the rationalization of duty structure is needed. Because different components, we can't have different duties. There will be a lot of interpretation issues. If a cap and this bottle, they will have different duty structures. It will always be confusing. So that's why a rationalization exercise has started. आपका क्या क्वेश्चन था? सिद्धार्थ भाई. ये अगले एक साल में कितनी वंदे भारत आप लोग एक हफ्ते में एक निकल रही है. एक हफ्ते में. दूसरा सवाल ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे. और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है. 1,54,000. 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है. एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे. जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ. बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए. एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट? इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं. जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में. ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1. ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1. और ये साइकिल चलती रहे. इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें. एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है. 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट? टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे. वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है. तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर
फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस। इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं है? हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है। फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया है। आप सोचिए उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। Thank you. Thank you, sir.